नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज सेठी, मैं रीजनल सर्विसेज डिवीज़न में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है जो लर्नर सपोर्ट सर्विसेज पे होता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी एडमिशन सेशन चालू हो चुकी है, तो आज हम लोग कुछ खास मेहमानों के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर रोज़ स्कूल ऑफ सोशल वर्क से, Hello. एंड डॉक्टर रम्या अगेन फ्रॉम द स्कूल ऑफ सोशल वर्क। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ सोशल वर्क के बारे में और उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर रोज़, आप ज़रा स्कूल ऑफ सोशल वर्क के ओवरव्यू प्रोवाइड करिए और उसके जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में बताइए। Thank you, Dr. Tirki. School of Social Work, जैसे सब जानते हैं, is a professional, it's dealing with professional discipline, and that is social work. And अगर if we look at it and if you pay attention to the PPT that we have prepared, सब student के लिए easy भी होगा जानने के लिए. The School of Social Work at Indira Gandhi National Open University, IGNOU as it's called, was established in the year 2007. So we have been almost a decade in running this course and this program, and we are the first school of social work in distance mode. Now, the main thing of social work in the distance mode is to provide quality education in the areas of definitely social work, and also we transgress into other issues and topics such as HIV/AIDS, counseling and family studies, and we also offer programs of all these concepts and leading to the award of certificate, diploma, graduate, postgraduate and doctoral degrees. So we have many students passing out from the social work, that is BSW and MSW and PhD and certificate and diploma as well. Now another thing is that this School of Social Work at IGNOU is the first school of social work offering social work programs in open and distance learning mode that I have mentioned already. It is important for me here to say that the first school of social work in India to take social work education to all the states and union territories in the country. No doubt we have a conventional social work education institution which is pertaining to the particular state, the particular country or the particular region. However, a school of social work at IGNOU is penetrating into every union territories as well as the state, because we have a lot of regional centers and study centers, and we have students from even the remotest corner of the state in India, within India, who are our students. Also, it has indigenously developed high quality self-instructional materials, and we also use multimedia approach for imparting social work teaching and training, definitely both in English and Hindi. And nowadays we are looking into the possibility of translating the materials into the regional language as well. Now we offer social work programs to in-service learners and engage a large number of practitioners for field supervision. Now, after the introduction of the School of Social Work, as Director School of Social Work, I would like to inform the stakeholders or the audience who are watching this program about the different programs that we are offering, because we have mentioned that we are offering programs from certificate to PhD. So it is important for you to understand what are the kind of programs that you can take admission in, especially if you are leaning towards a social work education. Now, the first and foremost program that we're offering is the PhD. This is, I'm summarizing in the increasing order, Doctor of Philosophy in Social Work, that is the PhD. We will talk about the details of these programs in the coming session, in the coming time. Now, we also offer two master programs, that is Master of Social Work Counseling, which is in the ODL format. The programs that I'm mentioning right now is all in the open and distance learning mode. Now, Masters of Social Work, which is a very generic program. Bachelor of Social Work. We also offer postgraduate diploma in social work counseling. We also offer diploma in HIV and family education, and we have certificate in HIV and family education, certificate in social work and criminal justice system, certificate in tribal studies.
Now we know that after COVID, COVID have given us the opportunity to reach out to students not only through the distance mode but also through the online mode as well. And online mode of teaching and learning have become a very important aspect in the the exchange of education, knowledge and learning. So School of Social Work at IGNOU is also taking a progress towards the online education, and we are currently offering two programs in the online mode. That is Bachelor in Social Work, which is offered internationally as well, and we are offering Certificate in Tribal Studies. Now this is in the infancy stage. However, we are every day is learning for us, and every day is a progression for us. So we are trying our best to develop more programs in the online mode, and we hope that we're able to achieve success. Now with the help of RSD also, we are able to reach to a large number of regional centers and study centers, and we get a lot of students. So it is quite a convincing and satisfying experience. Now, having talked about the different programs that we are offering from the School of Social Work, I would like to first start with the PhD in Social Work that we are offering, and later on my colleague Dr. Ramya will explain about the Masters in Social Work program. Now, if you look at the screen, it will be easier for you to understand. Now, PhD in Social Work is offered to the students who have done their post-graduation in specifically social work. Now, before we go about the qualification, I would like to mention here that the research degree program in social work aims at training professionals, both academicians as well as practitioners, in the skills and competencies related to systematic investigation of various issues and problems in the areas of social work. Now, under this program, a candidate fulfilling the following criteria is eligible for admission in the PhD program. Now, first and foremost is the master degree in social work or MPhil degree in social work. This is our basic criteria, the social work, and the minimum eligibility criteria as per the UGC is 55% mark at the post-graduation level. And we have our reservation in terms of 50% in case of reserved category, that is the SC, ST, OBCs, and as well as PWDs. Now, however, it is important to note here that candidates holding MPhil degree along with course and dissertation or both, or those candidates who have cleared NET, which is conducted by the NTA, or any other equivalent examination like the SLET, will be exempted from appearing in the entrance test. However, those who have not cleared NET or any other equivalent examination or not holding MPhil or any equivalent degree will be required to appear for the entrance test. Now, there are two stages in the PhD admission process, because PhD is definitely the highest level of education that one student can reach, and therefore here also we take important steps and as per UGC guidelines, all these steps have been envisaged. Now, the first step is the entrance test, which will be conducted at the national level in the selected centers only across the country. Now, stage 2 is where candidates who are successful in the entrance test will be called for interview or presentation of synopsis before the discipline doctoral committee, and the decision of the doctoral committee is final. Those candidates exempted from appearing in the entrance test will also be called for interview or presentation of synopsis before the discipline doctoral committee. Now, offer letter for admission will be sent only to the selected candidates. Now, for example, if you appear for an interview and you are not selected, that does not mean you'll be given a call letter or you'll be given a letter of admission. And you cannot come and say that you appeared for the interview, so you have to be selected. So the decision of the doctoral committee, the discipline doctoral committee is final, and that is what we will stick by. Now, this is in brief a little bit about the PhD program, and I think I'll request my colleague Dr. Ramya to talk about the Masters in Social Work Counseling program. She is the coordinator of Masters in Social Work Counseling program as well. Over to Dr. Ramya. Thank you, Professor Rose. Now, let us talk about the various programs, master's program and other bachelor program in detail. First, when we see the Master of Social Work Counseling program, this is one of the program which provides academic learning and professional education and training and counseling, especially in the area of counseling.
extending beyond the theoretical knowledge. And this program is mainly tailored to suit the counselors who are working in a wide range of organization, as well as those who are working with the community and the people who are working with the families and also with individuals. And when we talk about the various problems which are emerging now, and with the fast changing social scenario, there are a number of problems people face in the present situation. So definitely this course would be useful for our students. And when we see Western world, the counseling services are adequate. When we compare to India, here the programs or the courses which are especially offered in counseling is very few. And one of the course program which we are offering in IGNOU, that is MSW counseling, here the more focus is given on the field work, because field work is one of the important component in MSW counseling program, and it is the backbone of any social work program. And especially for MSW counseling program, fieldwork plays an important role in the process of counseling, the how the person acquires knowledge in the area of counseling, and he acquires skills and become an expertise in this area. Because when we see there is a demand for counselors in various settings, like we can say, for example, there is need for counselors in schools, corporate sector, healthcare setting, and other social welfare sectors, correctional settings, and so on. However, when we look at the various schools or universities where the counseling is taught as a course or offered as a program, it's very limited in India. So we can always say there is a good potential for employment in government as well as in NGO sectors. That's why we say there is an urgent need to train the people in this area, mainly to handle the stress of families, and also people who are working with call centers, corporate sectors, families, family courts, correctional settings, schools, universities, and other educational institutions and rehabilitation centers, refugee camps, institutions for the differently abled, child care, aged, adoption centers, family planning centers, voluntary counseling and testing centers, and especially in rural sectors where we can see where the farmers are, they were driven to commit suicide, and also other areas like de-addiction centers and so on. So there is a lot of scope in MSW counseling program where counselors are trained in these different settings. And now let's move on to the MSW program. Before moving on to the MSW program as such, I would like to talk to you about the number of credits. The total number of credits for MSW program is 72. And when we look at the eligibility, any person they have a bachelor degree from a recognized university, they can apply for this program. And the medium of instruction is Hindi and English. Hindi, we are offering this program from July 2020 onwards. So again, if you look at the duration, the minimum period is 2 years and the maximum period is 4 years. And this course, this program is offered both in January as well as in July cycle of admissions. The fee structure for this program is 36,000 and year-wise, they can pay 18,000 per year, and it keeps on changing. So you have to check the IGNOU website. So it is as per the university norms. Then talking about the fieldwork, as I said, fieldwork is one of the important component, and it is one of the important pillars of our program, that is MSW counseling program. Here the university has prepared 2 fieldwork journals. That is, in the first year they will have a fieldwork journal and they have to do concurrent field visits, that is for 45 days, and they have to choose one organization and they have to do continuously their fieldwork for 45 days with the help of the fieldwork supervisor, which is provided by the study center. And the second year also they have a separate fieldwork journal. So each year the learners, they are expected to successfully complete 16 credits of fieldwork practicum under the guidance of a professionally qualified social worker who has a MA or MSW, that is Masters in Social Work. So as I said already, the concurrent field visits they will be having in the first year, and the block placement, that is for 1 month. So this is about the field work.
And when we talk about the regional center and the study center, they play an important role. And because they are only helping the students, and the study center is the contact point for our students. And here they have to go and approach the coordinator, and they have to be supervised under a professionally qualified social worker who has MA or MSW in social work. So only a qualified guide can supervise for their field work. So this is mandatory. So therefore, the students also should ensure, and the coordinator also should see to that each student is provided, a supervisor to supervise their fieldwork journals. So this is very important. And completion of fieldwork in the first year MSW, once they complete the first year, then only they can move on to the second year. So this is very important. Dr. Ramya, I think it's very important for us to share here that the social work, the backbone of social work is field work itself. So for BSW program, MSW or MSWC, fieldwork is so important that the criteria which you've just mentioned about the supervisors, the academic counselors supervising them in the fieldwork, they have to be professional social workers or they have to be empaneled with IGNOU. So the students have to be very careful while they choose the academic counselor, because the regional centers does a lot of role in empaneling and paneling the fieldwork supervisors. And they cannot choose anyone randomly for fieldwork supervision, because if the supervision is not as per what it should be, then the students will only suffer. Yes. Okay. Now, I think we'll also discuss more about Masters in Social Work, the generic program, because right now what Dr. Ramya mentioned is the Masters in Social Work, which is a specialization in counseling. So this is, as mentioned before, we are offering 2 social work programs in master level, that is counseling specialization, and one is generic, that is MSW. So now we'll hear more about the Masters in Social Work from Dr. Ramya. Yeah, the Masters in Social Work, this program is offered through ODL, that's Open Distance Learning Mode. And this program, it provides opportunities to learners for higher studies who are, getting this degree, and professionally they are trained in social work. And besides these courses, we are also offering under MSW various core courses in the revised version. The revised version is offered from 2019 onwards. Mainly pertaining to social work curriculum across the globe and India. So here mainly the themes, if you look at the themes, some of the emerging areas of social work such as globalization, migration, history of social work India. So these are the emerging areas in social work. And we also have a theory paper on social work practicum and a course on HIV AIDS. So these courses really, this will be helpful to our students, and it is really correlates with the present day context. There's a call. Let's take the call. RC Pune, please come in. तिरकी साहब नमस्कार. हेलो. नमस्कार सर, मैं डीआर शर्मा आरती पुणे से बोल रहा हूँ. क्या मैं ऑडिबल सर? हेलो. I think there's a technical problem. We can continue the presentation. Yeah, otherwise they can just take the question and then send it to us so that we can respond. Yes. Okay, Will. Yeah, we can continue. Yeah. So in MSW program, if we see the practical components, this has been meticulously prepared mainly to provide our learners hands-on training, and this will also enable the candidates to find suitable placements within and also outside the country. Again, when we talk about the fieldwork component, we have designed in such a way, like as I said earlier, we can look at the revised version. Here we have included block placement as well as internship as a practical component, and there is more emphasis on social work in African context, criminal justice, contemporary methods, and also we have detailedly discussed about the values of social work, which are very important for our social work students, and also we have emphasized on international social work. So accordingly, a student is expected to successfully complete 72 credits
which include compulsory courses, elective courses, as well as field work. So here in the revised version, we have a kitty of many courses where they can choose from the elective courses. Right. And I think it is also right to say that why the focus on international social work in today's time is because with social work and the world becoming closer and the international borders also becoming much closer, and our students, most of them are working not only in India, but they're looking at opportunities and employment opportunities outside, or creating a more relevant outlook towards what social work in India is, or doing a comparative studies. So the international borders are becoming much nearer for most of our students, and that is why the School of Social Work at IGNOU have decided to give a course on international social work, so that students who are looking forward to more international seas, to advance their knowledge, that is why we have put in the course. So it is one of the unique features, I would say, among the many other unique features that we are offering in School of Social Work. This is probably one of those. Yeah, same like this in MSW generic program. Here also the total number of credits is 72, and any person who has done his bachelor's degree from a recognized university can apply for this program. And we are offering this program both in English as well as in Hindi. And when we look at the duration, the minimum period is 2 years and maximum is 4 years. And it is offered in both the January and July cycle of admissions. And if you look at the fee structure, it is 36,000. And 18,000 they have to pay per year. And now moving on to the Bachelor of Social Work program. Again, the bachelor degree program in social work, this is mainly meant for the people who are interested in providing professional assistance to people in need. And the Bachelor of Social Work program is designed in such a way it mainly helps the person to improve professionally. That is, the training is given to them to acquire a degree in social work, mainly to work in the areas which are socially relevant, like such as healthcare, community development, education, industry, counseling, family, correction, social defense, women, children, disability, and so on. So again, the Bachelor of Social Work program, this will be particularly useful to people who are employed at middle and lower levels with NGOs. It will also be useful to fresh candidates who may like to work in social and social welfare sectors. Mainly when we talk about IGNOU, the BSW program, here we are training people to work at the grassroots level. That is very important, because many students after completing their post-graduation or graduation, they move abroad. So they here in IGNOU, we are training and imparting training to these people to work for our people in India. So this is one focus in IGNOU. And when we talk about the credits of the BSW program, this program again, when we look at the credits, it is 132, and the eligibility is 10 plus 2 or equivalent. The fee structure for this program is 17,700, and this has to be per year they have to pay 5,900. So, and the duration of the program, minimum period is 3 years and the maximum period is 6 years. And BSW program is also offered both in both the cycles, January as well as in July cycle. And BSW program, again, we are also offering both in English as well as in Hindi medium. So these are our programs, major programs. Yeah, I think we should also inform the students that this BSW program, which we just, Dr. Ramya just talked about, it has been revised as of the current status, and we are, we are catering to the international market of 900 hours of field work, and also the credit that is 132 that is being mentioned, it is as per the UGC norms also, and this is divided into a semester. Now, if the details of the courses are that the program in BSW, now if any students, in particular an Indian student, take up these programs, then tomorrow he or she is interested in pursuing any further subjects of discipline in social work in terms of the master programs or the PhD level, then they are meeting the standards of it. So apart from not only looking at Indian market, if the students is
interested in the international education system, then these programs definitely help them to further, improve their knowledge or learning capacity or the opportunity that they get anywhere. So yes, that is why we take a lot of care in trying to facilitate students for the Indian market as well as the international and whatever the student is looking at. There's a call from Delhi. Okay. Can we have the caller, please? I think we have missed the call. Okay. So let's continue. Okay. Though now Bachelor in Social Work has been mentioned. Now we will look at the certificate programs, because now we just talked about three major programs that School of Social Work is offering. That is the Bachelor in Social Work, Masters in Social Work, and Masters in Social Work with the specialization known as counseling. So now we'll move ahead to the other programs, that is the diploma course and the certificate programs that we're offering. Now the School of Social Work also offering postgraduate diploma in social work counseling, and I think instead of me talking about it, Dr. Ramya, who's the program coordinator, can express much more regarding it. So, yeah, PGD-CON program, that is postgraduate diploma in social work counseling. Again, the focus is on counseling. Here, this program, this also provides both academic learning as well as professional education and training in counseling. And this program mainly focuses on counseling, improving the counseling skills of our MSW learners or the PGD-CON. It is a part of the MSW counseling program. And this program is also tailored to suit counselors who are working in various social welfare organization and also who are working in the community, as well as those who are working with the individuals and with the family. And as I said earlier, MSW counseling program also focuses on counseling, keeping in view the various problems the people who are facing across the board. Where the courses or the program as such offered is very limited in India. So we have offered this program. Again, when we look at the courses or programs in India, or various schools or universities who are offering these course or program are very few. And again, PGD-CON program, here the main focus is on improving their counseling skills and providing through different settings like healthcare settings, hospitals, and the learners can work in various other settings like correctional settings, juvenile homes, family courts. So these are the various areas. They can also work in industrial settings. So these are the various areas where our students can focus their field work. Like they can also work in schools as counselors. They can work in corporate sector, then other various settings like correctional setting, as I already told you, and social welfare sectors. I think there is a call. There's a call from RC Mumbai. RC Mumbai, please come in. Hello. Yeah, hello. Good afternoon, sir. This is Dr. Krishna Rao, Regional Director, RC Mumbai. Just I would like to ask you 2-3 There's a technical problem. I think questions or the we request the clarification. studio to please note down the question and The send it first to one us. We can continue the related to presentation. the MSW program, wait, is where it we are clear? having the Should we continue? Okay. Yes, please continue. And this PGD-CON program, this would enrich the functionaries who are working in NGOs, welfare agencies, as well as in human resource management. Now, when we talk about what are the criteria or eligibility for this program, any graduate in any discipline from a recognized university can apply for PGD-CON program. And this program we are offering both in English as well as in Hindi from July 2020 onwards. And this program is offered both in January as well as in July cycle. And the fee is 15,000. That is the full program fee for this program. Then moving on to other programs, I think Professor Rose would be able to tell about the CAFE Yes. programs and other programs.
But before I continue with the other programs, I would just like to ask the RSD division, like we mentioned about July and January cycle of admission. So if you could just tell the students who are or the audience who are just viewing this program, what we mean by the January and July session, so that it gives them better understanding of what to do when. जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स जो होते हैं, कॉमन प्रोस्पेक्टस में जितने भी प्रोग्राम्स लिस्टेड होते हैं, उनकी जो एडमिशन होती है 2 साइकिल में एडमिशन होती है। एक तो है जुलाई सेशन और दूसरा है जनवरी सेशन। तो हमारा जुलाई सेशन जो मेजर सेशन है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, और अभी जो जुलाई सत्र का जो एडमिशन साइकिल है वो अभी जारी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो दूसरा है जनवरी साइकिल जो एडमिशन, उसका एडमिशन चालू होता है सितंबर या अक्टूबर के महीने में, और उस वक्त उसकी एडमिशन होती है, और वो एडमिशन चलता है 31 जनवरी तक। और ये जुलाई सेशन का जो एडमिशन है ये 31 जुलाई तक ये एडमिशन चलता है। तो हमारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है जिसमें ये एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ये मौका मिला है तो इस दौरान मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा। बहुत ही रिसेंटली 31 मई को हमें AICTE से एक अप्रूवल लेटर मिली है, जिसमें जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्रोग्राम है और MBA प्रोग्राम है, इनकी अप्रूवल हमें मिली है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो ODL प्रोग्राम जो है MCA का, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, उसमें IGNOU को कंट्री वाइड 20,000 सीट्स अलॉट किया गया है। तो ये हमारे रीजनल सेंटर्स के लिए एक मेजर चैलेंज है कि इतने जो 20,000 सीट्स जो हमें MCA में ODL में मिले हैं और 10,000 सीट्स जो ऑनलाइन प्रोग्राम में मिले हैं MCA के, इन सीट्स को कैसे भरा जाए, कैसे हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा मात्रा में एडमिशन कराया जाए। इसके अलावा MBA में कई सारे MBA के कई सारे जो स्पेशलाइजेशंस हैं, उसमें कई सारे MBA प्रोग्राम्स के लिए भी अप्रूवल मिले हैं। एक तो है जो जनरल MBA जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ODL में 40,000 सीट मिले हैं हमें। इसके अलावा एक है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसमें हमें 10,000 सीट्स की अलॉटमेंट हुई है। एक और MBA प्रोग्राम है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें 10,000 सीट अलॉट हुए हैं। फिर एक और प्रोग्राम है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें 10,000 सीट अलॉट हुए हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें भी 10,000 सीट अलॉट हुए हैं। और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसमें भी 10,000 सीट हैं। तो इस तरह से बहुत सारे MBA में सीट्स अब अलॉटेड हो गए हैं और ये MBA अब ओपन हो गया है। तो हमारे जो जुलाई सत्र में जो एडमिशन चल रही है, इस सत्र में भी इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया जा सकता है। तो हमारे रीजनल सेंटर्स को ये आह्वान है कि इसकी अच्छी तरह पब्लिसिटी की जाए और हमारे जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं उनको इन जो सीट्स, जो नए सीट्स क्रिएट हुए हैं MBA प्रोग्राम और MCA प्रोग्राम में, इसका फ़ायदा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहुंचाया जाए। और एक डॉक्टर मनोज की मुझे पूछना था, ये एडमिशन के बाद ये इंडक्शन मीटिंग होता है, ये कब होता है? एडमिशन ख़त्म होते ही, लाइक हाउ यू विल इन्फॉर्म द स्टूडेंट, हाउ विल यू कम्युनिकेट? हाँ, तो ये जो है हमारा जो एडमिशन है, इसमें बेसिकली सबसे पहले तो एडमिशन चलता है। तो एडमिशन में सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। और क्योंकि जब एडमिशन की बात कर रहे हैं तो स्टेप वाइज मैं बता ही देता हूँ कि हमारे जो एडमिशन में जो एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें 8 स्टेप्स में हमारा एडमिशन होता है। उसमें आपको सबसे पहले जो है आपके लिए आपको रजिस्टर करना ज़रूरी होता है, जिसमें आप यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। और वो यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ही आपका जो एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो एडमिशन फॉर्म जब आप भरते हैं तो सबसे पहले आप जो है ये 8 स्टेप्स में बटा हुआ है। 8 स्टेप्स में एक एक स्टेप, जैसे इनकम टैक्स की पोर्टल में आप जैसे आपका इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं, उसी तरह से उसी तर्ज पे ये हमारा ऑनलाइन फॉर्म बनाया गया है। सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल्स भरते हैं, जिसमें कि आपका नाम, आपके
माता पिता का नाम, इस तरह के जो पर्सनल डिटेल्स है वो आप भरते हैं। अगले स्टेप में आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भरते हैं। क्वालिफ़िकेशंस जैसे कि आपने अगर बीएजी या बीएसडब्ल्यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको इसमें जो 10+2 अगर इसकी क्राइटेरिया है तो आपको क्लास 10 और 12 की जो क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है उसकी डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। उसमें आपकी क्या परसेंटेज मार्क्स आई है, ये सब आप डिटेल्स भरते हैं। नेक्स्ट स्टेप में है आपको कोर्स डिटेल्स भरना पड़ता है। तो कोर्स डिटेल्स जो है, इसमें जो कंपलसरी कोर्सेस हैं वो आपको ऑटोमेटिक आपको पोर्टल में दिख जाता है। उसके अलावा अगर उसमें कोई ऑप्शनल कोर्सेस होते हैं तो वो आप भरते हैं। इसके बाद जो है आप कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स भरते हैं, जहाँ पर आपकी जो स्टडी मटेरियल है वो आपको पहुँचाई जाती है। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो एडमिशन पोर्टल में ये सुविधा है कि आप या तो फिज़िकल मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल रिसीव करना पसंद करेंगे तो आप प्रिंटेड मटेरियल के लिए ऑप्शन चुन सकते हैं, या फिर आप सॉफ्ट कॉपी मटेरियल के लिए भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट कॉपी मटेरियल चुनते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है, जो आपका प्रोग्राम पे उस पर 15% कटौती करके आपकी फ़ी चार्ज की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करते हैं तो उसमें जो आपने रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस जो आपने मेंशन किया था उसकी मार्कशीट्स, उसकी सर्टिफिकेट्स आप अपलोड करते हैं। उसके बाद जो है आपको एक प्रीव्यू मिलता है जिसमें आपकी डिटेल्स है आपको पूरी एक पेज में दिखती है। हर स्टेज में जो जो आपने इन्फॉर्मेशन भरा था वो दिखता है, और अगर उसमें कहीं भी आपको लगता है कि कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ियां हैं, आप सुधार करना चाहते हैं तो आप उस स्टेज में वापस जा सकते हैं और उसमें करेक्शंस करके फिर आप रिव्यू कर सकते हैं पूरे इन्फॉर्मेशन को, जब तक आप वो इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड ना हो। और जब आप संतुष्ट हैं कि आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, जो आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट किया वो करेक्ट है, तो आप पेमेंट पेज पे प्रोसीड कर सकते हैं। और वहाँ पर हमारे जो वेबसाइट में है, यहाँ पर 2 पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं, एक पेमेंट गेटवे 1 और पेमेंट गेटवे 2, जहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए आप पेमेंट करते हैं। इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है जिसकी आप कॉपी आपको हाईली रिकमेंडेड है आप रखें, क्योंकि उसमें जो आपकी जो कंट्रोल नंबर है और आपकी जो कोर्स की पूरे डिटेल्स उसमें होते हैं, जिससे कि आपको बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको क्लैरिफिकेशंस या क्वेरी के लिए आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब हम ये जो प्रक्रिया होने के बाद आपकी फॉर्म हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोसेस की जाती है। हमारे यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेल है, जहाँ पर एक टीम बैठी है जो आपके फॉर्म्स को प्रोसेस करती है। अब फॉर्म अगर आपकी सही है तो इसमें आपको कंफर्मेशन भेजा जाता है, आपको ईमेल में कंफर्मेशन आती है, और आपको ये बताया जाता है, एक लिंक दिया जाता है जहाँ से आप एज ए स्टूडेंट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते हैं, और वहाँ से आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आप जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड के बिना आप रीजनल सेंटर में आपका क्वेश्चंस हो सकता है एंटरटेन ना किया जाए, आपको स्टडी सेंटर में भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको वो आईडी कार्ड का जनरेट कर लेना, उसकी कॉपी आपके पास रखना बहुत ज़रूरी है। ये आईडी कार्ड आपको एग्ज़ाम सेंटर्स में भी दिखाना पड़ता है, हॉल टिकट के साथ ये आईडी कार्ड साथ में रखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में अपेयर करने के लिए। अब ये सब हो जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है इंडक्शन। इसमें क्या होता है, जब एडमिशन क्लोज हो जाती है, एडमिशन समाप्त हो जाती है, एडमिशन की लास्ट डेट जब पूरी हो जाती है तो इंडक्शन प्रोग्राम कराया जाता है। हमारे यूनिवर्सिटी में जो स्टडी सेंटर्स हैं, करीब 2000 से ज़्यादा स्टडी सेंटर्स हैं जो सारे देश में फैले हुए हैं। इन स्टडी सेंटर्स में हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन प्रोग्राम किया जाता है। या तो ये फेस टू फेस मोड में कराया जाएगा, या फिर कोविड जैसे सिचुएशन में ये ऑनलाइन माध्यम से भी ये इंडक्शन प्रोग्राम कराया जाता है। तो इंडक्शन में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत स्पेशलाइज्ड तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो कुछ स्कूल्स के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भी सेलेक्टिवली इंडक्शन में बुलाया जाता है, या फिर कई सारे प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को इकट्ठा बुला करके भी इंडक्शन कराया जाता है। और इंडक्शन में स्टूडेंट्स को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडक्शन में आपको पूरे स्टूडेंट लाइफ साइकिल के बारे में, जैसे आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेके जितनी बार आपको इग्नू के साथ जो संपर्क करना पड़ेगा, जितनी बार आपको, जैसे कि री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है,
एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीडियर है, आपके असाइनमेंट सबमिशन का जो प्रोसीडियर है, और जैसे कि अभी हमें पता चला कि फील्ड वर्क का भी जो कार्य है, ये सब के बारे में आपको सब बताया जाता है। और यहाँ पर जो हमारे रीजनल सेंटर के फंक्शनरीज, हमारे ऑफिशियल्स इस इंडक्शन प्रोग्राम में आते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्टडी सेंटर्स के फंक्शनरीज होते हैं वो आपसे रूबरू होते हैं, और स्टडी सेंटर्स के बारे में आपको उनके फंक्शनिंग के बारे में, हमारे रीजनल सेंटर्स के फंक्शनिंग के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाता है। और एक तरह से वो आपके लिए एक पहला जो है मतलब संपर्क करने का चांस है, जहाँ पर आप एक अच्छी तरह से आप यूनिवर्सिटी के सिस्टम को समझ सकते हैं, और आगे का जो आपका जो पढ़ाई का जो कार्यक्रम है, जैसे उसके बाद जो आपके जो काउंसलिंग शेड्यूल कब आपके रीजनल सेंटर के वेबसाइट में आएंगे, या फिर आपके स्टडी सेंटर के बोर्ड में, नोटिस बोर्ड में कब पब्लिश होंगे, ये सब आप ये जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो वहाँ पर जो स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे रूबरू हो सकते हैं, और वहाँ पर कब किस टाइम पे, जनरली ये वीकेंड्स में जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, इन सब के बारे में भी आपको बताया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका होता है जब आप हमारे रीजनल सेंटर्स के फंक्शनरीज और हमारे स्टडी सेंटर्स के फंक्शनरीज के साथ आप एक जान पहचान, एक रिश्ता कायम कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में मैं इंडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। जिसने स्टूडेंट मिस बहुत करते हैं ज़रूरी फिर है ये। बहुत मुश्किल होता है उनके और लिए। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स का लगता है कि ओडीएल इग्नू में एडमिशन लिया तो जस्ट बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी समय भी ख़राब हो जाता है, फिर वो पूछते नहीं है कि एग्ज़ाम्स कब होते हैं या सेंटर्स के बारे में। तो एज अ स्कूल we also faces difficulties. Students do not read the program guide. Everything is self-explanatory. Like in the introduction, we mentioned that the School of Social Work, or IGNOU as a university, offers a program guide with all the courses and programs that we are offering. So students अगर program guide पढ़े for every courses जिसके लिए उन्होंने admission लिया, तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगे। आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा कब है और कब क्या है। So now, going ahead, we'll talk about the diploma program that School of Social Work is offering. Now, DAFE, that is Diploma in HIV, AIDS and Family Education, is one such program. Now, why are we focusing on HIV is most of the question. But this DAFE program was launched and introduced during the pandemic that was known as HIV. Now corona is a new pandemic that we are coming across, and HIV then was the most strategic diseases, and we had to tell people, we had to inform people what are the myths and misconceptions, what to do, what not to do, and that is how we came up with Diploma in HIV and Family Education program. Now, having said that, the Diploma in HIV and Family Education aims at providing basic and accurate information about HIV/AIDS, sex and sexuality, family life education, alcohol and drugs, and communication, as well as counseling. The contents are designed to impart an integrated understanding to the learners about the issues involved in HIV/AIDS, as well as behavior modification. Now, the main objective of this program is to enhance the knowledge and skills of functionaries involved in HIV/AIDS and related issues. Why are we focusing on this is because when AIDS came into being, people were afraid to acknowledge others or greet people. So, in simple words, we wanted to express in Hindi, if I may say, हाथ बढ़ाने से प्यार बढ़ता है. So that is what we are trying to achieve with this program, because HIV/AIDS, everyone was afraid, nobody wanted to meet people. So the misconception was so much so that the School of Social Work decided to, and since we reached to a large number of state as well as union territories, people who have taken these programs, I think, has helped, and the society has been more empowered with knowledge and information. So this program was launched, and the main target groups include the school students as well as teachers, functionaries, NGOs functionaries, parents, couples who are to be married or about to get married, as well as
acquiring topic on a subject. Now, the Diploma in HIV and Family Education program has 7 courses and is on offer from several state universities also. Now, this program is taken up by different schools of colleges. Now, if you look at the screen, I've given you a brief a snippet of what the program is about. The total number of credits of this program is 24. The fee is just 1,500 for full program. The duration is minimum 1 year, a diploma course, a minimum 1 year, and it is extendable up to 4 years maximum. The eligibility criteria is 10 plus 2 or its equivalent, and we are offering this program both in English as well as in Hindi. Now we will talk about the certificate in HIV and family education. This is also in similar line with the diploma in HIV education. Now, diploma is a 1-year program that is offered by IGNOU, and certificate is a 6 months program. That is the difference. However, the program or the courses of the certificate is more or less similar to what it has been offered in the diploma program. Now, the certificate in HIV and family education provides comprehensive knowledge about what, why, and how of HIV AIDS, family education, facts of life, and substance abuse. This is what was also covered in diploma. Now, the contents are designed to impart an integrated understanding of HIV AIDS and behavior modification. Now, this certificate program has the following courses of 4 credit each. That is 4 credits, which means 16 credits in total because it's a certificate program. Now, a learner has to choose 2 compulsory courses and 2 optional from the 4 electives that is being offered. One has to acquire 16 credit for a certificate. Now, a student who has successfully completed the certificate course can also pursue the diploma course by completing the remaining courses of 16 credits. And the request to the university for credit transfer, so this is one possibility. So if you are enrolled in the certificate program of 16 credit course, that is 16 credit. Now, if you have to, if you feel that another 6 months you can do more credit and get a diploma, so why not? This is the opportunity that we are giving to the students as well. Now, the total number of credits here in CAFE, that is a certificate in family and HIV and family education, is 16 credit. The fee, which is definitely subject to change because it's under the university rules, is 1,000 as of now, and the minimum period of completion of this program is 6 months and maximum extension is still 2 years. Eligibility again is 10 plus 2 and medium of instruction is English and Hindi. Now, we will go to another certificate program, that is certificate in social work and criminal justice system. Now, this program aims at developing a cadre of trained para-social workers to render humanitarian services in criminal justice system. It also aims at providing knowledge-based and skill training to learners along with practical experiences to render social and legal services in correctional settings across the country. Now, another focus of this certificate program in criminal justice system is to extend professional help to target population in correctional settings. Now, the certificate program in social work and criminal justice system would pave the way for creating space and demonstrate humanitarian initiatives that address specific issues of marginalized people in the criminal justice system. Now, I would like to add that when we talk about law and order situation in our country, many people, even the most educated people, are not aware of any kind of laws. Now, this program doesn't talk about much laws, but then it talks about the rights of the person. So when you take up this program, this certificate programs, there's an increase in the learning, there's an awareness of what happens and how it can be handled. Now, this is total of 16 credits with a fee of 1,400, minimum time period of 6 months and maximum of 2 years. Eligibility criteria 10 plus 2 and offered both in English and in Hindi. Now, we'll go to one more program, that is Certificate in Tribal Studies. Now, this is offered both in ODL as well as in the online
mode. Now, the School of Social Work has launched the certificate programs in tribal studies. As mentioned, we are offering a lot of indigenous programs with learning materials, and we try and look at the topic, the issues that is very common and pertinent in the contemporary times and develop such. So this is also one of the programs. The course provide information about the tribal community found within India and provides the learner with a wide knowledge about the practices, beliefs and culture of the tribal communities. This is a 16 credit program with a fee of 1,000. Minimum period of completing this course is 6 months and maximum is 2 years, and 10 plus 2 is eligibility, and it is offered only in English. Now this is, as mentioned, both in the ODL, that is open and distance learning mode, as well as in the online mode. So student can also take admission in the online mode for CTRBS. And Professor Rose, both these programs, they don't have field work, these certificate programs. Yes. So, as Dr. Ramya has rightly mentioned, the BSW, MSW, and MSWC and BSW online, they are fieldwork oriented. However, the other programs, the certificate and the diploma, we don't have fieldwork. Now, the last program I would like to mention is the Bachelor in Social Work, which has been offered online. This is a very recent initiative of the School of Social Work, which has been offered internationally, the BSW program online. Now, the Bachelor Degree Program of Social Work is aimed for people who are interested in providing professional assistance to people in need with the changing global scenario, new concerns and human problems. There is a lot left to be addressed. So what we are trying to do is give a small effort in trying to build about a change in the society. Now, this is same as what the Bachelor in Social Work is offering through the online, through the ODL. That is, the total credit is 132. 10 plus 2 equivalent is the eligibility criteria. As of now, it is offered only in English. Now, the fee structure is different here because, as mentioned, it is offered internationally also, but in the online mode. Now, for Indian students, the fee structure is 5,900 per year. For the SAARC country, it is Indian rupees of 10,000 per year, and non-SAARC country is $650 US dollar per year. Now, bachelor program, why we're mentioning it per year is because bachelor program is for 3 years, and so the fees that we've mentioned is for per year aspect. Now, this program also have field work, like Dr. Ramya has mentioned, and this is more or less all in all the programs that is being offered by the School of Social Work. And I think Dr. Ramya would like to throw some more light on the usage or the importance of the field work that the faculty or the school in social work, we really promote. The fieldwork, as we said, it is the backbone of any of our programs, especially when we talk about School of Social Work. So a lot of emphasis is given for fieldwork, and I think we need the cooperation and support from all the regional centers and study centers, because when we say they are to be supervised by a qualified MSW or MA social work, in some places this is not happening, so that should be ensured by the study center coordinator as well as from the regional centers. So they have to appoint only the qualified professionals, and each student should get supervised by the qualified person, and that should be empaneled by regional centers. And many places still we are streamlining the field work, especially when we're talking about MSW programs or our BSW programs. There are a lot of issues, and so many problems have come up when we are evaluating the journals. So that is also another aspect we are looking at it. And I would also like to hear from Dr. Manoj Turkey regarding like a field work. What is the support provided by all the regional centers and study centers presently? Yes, with regard to the continuous evaluation and the continuous assessment, fieldwork, journals and fieldwork is an essential component. So our जो study centers जो होते हैं वहाँ पर हमारे जो empaneled काउंसलर्स होते हैं उनके ज़रिए उनके मदद से हमारे स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम्स को करते हैं, और इसमें जो फील्ड वर्क जर्नल्स में उनकी मदद ली जाती है.
तो इसमें क्योंकि राइट नाउ आई एम इन द हेडक्वार्टर्स सो आई एम नॉट familiar what exactly is going on. I would not speculate on the details right now. So. No, Dr. Manoj, why we are saying field work ज़रूरी क्यों है is because क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को लगता है कि सोशल वर्क में एडमिशन लिया तो वो थ्योरी पेपर्स ख़त्म करके कोर्स उनको लगता है कि डिग्री मिल जाएगा, लेकिन सोशल वर्क बिकॉज वो प्रोफेशनल कोर्स है और फील्ड वर्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है. इसके वजह से बहुत लोग थ्योरी पेपर्स तो कर लेते हैं लेकिन फील्ड वर्क जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है वो ख़त्म नहीं कर पाते इन द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड. सो उससे क्या होता है कि उनको डिग्री नहीं मिलेगी. Then what happens is you give theory paper, you pass in all the theory paper, but then if you do not finish your field work, then you will have to do the field work again. So it is going simultaneously with each other. You cannot expect us to give you a degree by giving your theory paper and say field work I don't want to do. So without field work, you do not pass. So social work is a very important subject for the society, for you, for us. But meeting the criteria in terms of theory papers and practical, that is field work, is also very important. And that is why we always feel Another that important thing, I think many students, they miss out when they submit their journals or the assignments, they have to get an acknowledgement slip or receipt. Yes, that's so very that is not with important. them. And meanwhile, like during this COVID time, many are like their journals are lost, so they are coming to headquarters, and this is also another issue. So the study center coordinator should ensure that they should be given the receipt for the fieldwork journals. So this is another step I think they have that to is take. I think this is very important for students. Anywhere you submit your fieldwork journals or your assignments in any study centers or regional center, make sure that you do take the receipt of the submission, or there's an acknowledgement with the sign and a seal of the regional center or study center, so that tomorrow you have a proof that you have submitted the same. For if tomorrow in it gets lost in translation, or it get lost in transportations or whatever, then at least you have a proof that you have submitted your required this thing. And another important thing I would like to add before we close down is always keep a copy of your assignments or your field work, because anything can happen. You may submit it, but then it might get lost during carriage or postal services. Anything can happen, rain, dust, storm, anything can happen. So it's always good that you keep a copy of your assignments or your journals, so that tomorrow something happens, you always have a backup plan. Yes, can you say a bit about the employability of the especially the certificate and diploma and PG diploma courses? Certificate and diploma courses that is launched by School of Social Work is mainly looking at certain stakeholders who are already in employment, or who have been, trying to enhance their experiential learnings. So if you are somebody who's working in an NGO, then if you take, let's say, for example, if you're working in Ministry of Tribal Affairs and you're doing certificate in tribal studies, what happens is your understanding of the tribal issues and situations and policies is enhanced, and you do get a better understanding. So it helps you formulate more research projects or grants or anything like that. So similarly, if you work in an NGO which is working with deprived people, so if you are doing diploma in HIV/AIDS or certificate, then it depends on NGO to NGO, also organization to organization, whether you get a boost or a bonus in your salary. But then most of all, in comparison with the financial advancement, your learning gets improved, and it helps you in better formulating your project proposal, because that is what everybody aims in. And when you formulate a better proposal with better knowledge and articulation, then that is what gets you more and more funds for the organization. इसके साथ ही हमें बताया जा रहा है कि हमारा समय समाप्त होने वाला है. हम आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा प्रोफेसर रोज़ और डॉक्टर राम्या को इस प्रोग्राम में आने के लिए, और उन्होंने काफ़ी डिटेल में अपने स्कूल ऑफ सोशल वर्क और उसके प्रोग्राम्स के बारे में बताया है. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हम इस चर्चा को जारी रखेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम हर मंगलवार को होता है किसी और टॉपिक पे किसी और स्कूल के साथ. धन्यवाद.
जिसे गा रही हैं विदुश्री पांडे। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूँ मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए Hello learners,
Welcome to this teleconferencing session with myself, Professor Meenal Mishra, and Professor R. Bhaskar from School of Sciences, Discipline of Geology today. And today we will be discussing a very interesting topic that pertains to your BSc second semester course, that is BGYCT 133, crystallography, mineralogy and economic geology. So, basically, before we start, let me tell you what is mineralogy. In mineralogy, we study the physical and chemical properties of minerals. And what are minerals? Minerals are naturally occurring inorganic, solid, crystalline substance, and they have a definite chemical composition and a distinctive physical property. Now, mineralogy has been divided into physical mineralogy and optical mineralogy. In physical mineralogy, you study the hand specimen. You look at its form, its color, its fracture, cleavage, and many more physical properties. And in optical mineralogy, you study the mineral or a rock under the microscope, and this microscope is not an ordinary microscope. It is a special petrological microscope which uses polarized light. So in this you study various optical properties of the minerals to identify a mineral and a rock. So Professor Bhaskar, what is this optical mineralogy and what are the properties that we study under this subject? I'm sure you have given the background. Rocks are made up of minerals, and here we use this petrological microscope, as Professor Meenal Mishra said, to study the optical properties of minerals. Now the question is, what is the importance of this? The importance is, when you do the optical study of minerals, it is relatively easy to do the analysis. You can study the rocks, you can study the minerals. It is a classical method, it is a cheap method, and this one is non-destructive. When I say non-destructive, it means that you can use this sample once you have created any number of times. Now if you see the lattice symmetry which is there, it is not only reflected in the external morphology, it is also reflected in the properties of the mineral. Therefore, if you want to study the optical properties, or if you study the optical properties, you can identify which mineral is there. In fact, mineralogical identification is very important in petrological studies to know what kind of rocks are there, in structural studies, in mineral exploration, and many other branches. Needless to mention, this is one of the cheapest and fastest way to study the minerals. What we do normally in geology is we take the rock, we study the hand specimen. After the hand specimen, we study the next step is to study the thin section. After that, we select the samples out of that and then go for the chemical analysis. Why we do this sequence of this pattern we follow? Because the cost of chemical analysis is very high, whereas the cost of doing a slide and studying it mineralogically is very low. Not only that, this is non-destructive. You can use it as many times as possible. So that is the reason it is very popular. In fact, if you do a good mineralogical study, good textural study, you can know the interrelationship between the grains. You can know the sequence of the mineral formation. You can know the history of the formation. You can understand largely the deformation history. You can also tell about the frozen reactions. You can also tell about the weathering products and how the nature of weathering is occurring. So this is a very classical tool which all geologists use in their studies. Now, if you see the diagram on the screen, I am showing a petrological microscope. What is the petrological microscope and what is its importance? Petrological microscope uses the polarized light. Now, if you see, there is basically three things you have to understand in this lecture for the using the petrological microscope. One is you have the polarizer at the bottom, then you have the stage. Stage is where you keep the mineral, the thin section, and then top you have the analyzer.
So you have three ways of studying the mineral properties. If you see my next slide, you can see there are three ways you can study the mineral properties. One is properties under the ordinary light, where polarizer and analyzer are out. The second is certain properties can be studied under plain polarized light, both polarizer and polarizer out, analyzer in. Then you can also study in cross nickel, where both are in, polarizer as well as analyzer. In case your microscope does not have the facility of removing the analyzer, then in that case you can study in ordinary, normally you can study in the ordinary light if you have facility. Otherwise you can study many properties in plain polarized light, and some properties can be studied only in the cross polarized light. Now you may be wondering, what is polarized light and what is an ordinary light? Ordinary light has its planes of vibration in all directions, whereas if you see plain polarized light, that vibrates in only one plane perpendicular to the direction of the travel of the light. So this is the plain polarized light. And what is done in this is that the mineral is kept, the thin section is kept on the stage which is between the analyzer and polarizer, and then you can have study, if you have the facility, ordinary light, or you can do the plain polarized light. If you use both the nickels, prisms, then you can have the cross nickels. So this is how we study. And the first thing we should understand is that the mineral has to be anisotropic. That means it has different properties at different directions. Then you get better results. Isotropic minerals also can be identified. Then you can see what are the properties you can study under the plain polarized light. The simple ones are whether it is transparent, what is the shape, habit and size, what is the color, and then what is the pleochroism, whether you are seeing. This you can see in plain polarized light. Then what is the cleavage, and what is the relief, what is the inclusion, and what is the alteration. These are the properties which we can study under the plain polarized light. So if you see, these are the properties I will be focusing on today to explain to you what are this. The first one is transparency. If you see the slide, you can see that if the mineral appears in the microscope anything other than black, that means light passes through the mineral, it is transparent. But if it is totally black, regardless of the rotation of the stage, then in that case it is black, it is opaque. So you can see the figure I have shown. There is one transparent mineral and there is one opaque mineral. It is totally dark and the relief is high. The borders are seen clearly. The next property we study in the microscope is the shape, habit and size. What is the shape? That means what are the boundaries, how they look like, whether they are well developed. If they are well developed boundaries, you call them euhedral. If they are partially developed, they are called subhedral. And if they are poorly developed, they are called anhedral. Then there is another term which is called habit. Habit is nothing but the growth form of it, and you can have isometric forms, you can have tabular forms, you can have sheeted form. The third thing we see is size. Size of the mineral can also be estimated. How do you estimate the size? You know the magnification of lens you are using, how much magnification you are using. You also know the ocular lens, what is the magnification. So seeing that, you can approximately measure the size of the mineral, and size is estimated in mm, and this is also a very useful property. The size and shape tell you a lot about the conditions of growth, or in other words about the crystallization process. Then the next feature which we study is very simple, which is called color. What we do is whether when we see under the microscope whether it is colorful or not. Normally we may think that if the hand specimen has colorful nature, the thin section may have, but it is not the case. Many hand specimens may appear colorful, but the thin section may not have any color. So color is observed, and when you observe the color, you give different nuances to it. Now if you see the TV screen, you can have augite, hornblende, garnet, calcite, plagioclase, quartz I have shown. The bottom three, calcite, plagioclase and quartz, are colorless, whereas augite is light green to brown in color, and hornblende is greenish
to brown in color, and you can also have garnet. You can see all these things like garnet have high relief. So you can see in the color and you can make an estimate of what could be the mineral. The next property we see is the pleochroism. Now to study this property of pleochroism, we should have the plane polarized light. And what happens in pleochroism? When you keep the slide on that stage and when you rotate the stage, there is a play of colors. Pleo means many, chroism means color, many colors. If there are only two colors, it is called dichroism. So all anisotropic colored minerals have pleochroism. They can be strong or they can be moderate or they can be weak. Normally when we describe the pleochroic color scheme, we give a range of colors what we are seeing. Now if you see the next diagram, I am showing you a biotite mineral. A biotite mineral which is dark green, greenish blue and brownish in tinge, and this is the pleochroic scheme. In fact, inside this biotite you have these black grains which are nothing but the pleochroic halos, and these are the radioactive substances which are there, which gives this pleochroic halos. Then the next one property we study is the cleavage. What is cleavage? If you see, cleavage is nothing but the planar surface of low cohesion. That means it is the area where it easily breaks down. And the quality of the cleavage, when you see under the microscope, you can describe as perfect, imperfect, good, distinct, indistinct, poor or absent. In fact, just by seeing the cleavage pattern, you can identify the cleavage angle. For example, amphibole will have a different cleavage angle and pyroxene will have different cleavage angle. You can have simple cleavage structures or you can have perpendicular, just like you have in microcline, which you are seen. In the second slide, you can have perpendicular. Then the next property we study in the plane polarized light or ordinary light is the relief. This again measures the relative refractive index of the mineral with reference to the Canada balsam or the material on which you are mounting. Relief can be positive or negative. It is positive if the refractive index of the mineral is higher than that the material it is embedded in. It is negative if it is reverse. So relief is an important parameter. In fact, if you see under the plane polarized light, you can also see another phenomena which is called as twinkling. It is seen in calcite minerals. When you move that, you can see like stars, it twinkle. Now, if you see the relief, you can have low relief, you can have medium relief or strong relief. For example, you can see you may have quartz and feldspar which may be low relief, but garnet will show a very strong relief. That means the boundaries are clean, shown clearly. Then the next property we study in this plane polarized light is inclusions and alterations. Inclusion means what is included inside the mineral. It can be solid, liquid or gas. The inclusions, if present, we describe them like what is the color, whether it is opaque, what is the relief. If it is altered, then what is the alteration mineral, what are the cleavages, where it is present along the cleavages or cracks. Now if you see this diagram, which is the next one, you are seeing an inclusion, a zircon inclusion. You are also seeing the fluid inclusions which are there surrounding that. Then the second diagram is olivine, which is alteration you are seeing in the cracks, which is the serpentine which you are seeing. These are the features we study. Now what I have explained is so far is the ones which are observed under the plane polarized light. Learners, you may be interested to know what can we do if we insert both the polarizer as well as analyzer. In other words, cross nickels. Dr. Meenal Mishra, can you please explain to the learners that how cross nickels will reveal different properties of the minerals? Yes, sure. See, when you look at a mineral in a rock or a mineral itself, without looking at both the properties under plane polarized, as Professor Bhaskar has told you, and between the cross nickel, the study is not completed. You will be finally able to identify when you look at the mineral under both the conditions. So, when you look at the properties between cross nickels, it means that both the analyzer in the microscope, as it was shown, both the analyzer and polarizer, they are inside the assembly in the microscope.
First property that we look at is isotropism or anisotropism. Second one is interference colors. Third one is extinction, and then twinning and zoning. We will discuss them one by one. Now, what is anisotropism or isotropism? See, there are some minerals that become dark when you put the slide on the stage under cross Nichols and you rotate the stage. Even on the rotation of the stage, the field of view, it remains completely dark. So these minerals are known as isotropic minerals. And the minerals crystallizing in cubic system or isometric system like garnet, they are isotropic. And some of the basal section of some minerals are also isotropic. And then anisotropic. When in the field of view, the mineral, it becomes completely dark 4 times. See, when you rotate the stage by 360-degree angle, what happens? That 4 times this mineral become extinct at 90 degrees. And the position between these two angles at 45, the mineral that displays a very bright color. We will talk about the interference colors in the next slide. So these minerals which show different colors and very bright colors, and on the rotation of the stage they are shown 4 times. So these are all anisotropic minerals. So the minerals belonging to orthorhombic system, monoclinic, triclinic, tetragonal, trigonal and hexagonal system, they are all anisotropic minerals. Now here in this slide you can see this garnet, this hexagonal, this is garnet, and on rotation of the stage, this garnet, it remains completely dark between the cross Nichols. So what is this? This is isotropic mineral, whereas in the next photograph you can see different colors. Here is this little zircon. You see this zircon, it is showing such bright colors. So all this mineral here, quartz and then orthoclase, all of them are displaying different interference colors. So let us see what are these interference colors. See, when the white light, it passes through an anisotropic mineral, all wavelengths are splitted into 2 polarized rays, O ray and E ray. O ray means ordinary ray and extraordinary ray. And these 2 rays, they vibrate at 90 degrees to each other. Then the phase difference between the 2 rays will match with the wavelength of the same color in the spectrum. And different colors, you know, have different wavelength. So when the rays leave the crystal, some colors may be retarded and some will not. Further, anisotropic minerals in intermediate position, as I told you earlier also, when you rotate the stage by 360 degrees, so there is an intermediate position between 2 extinct positions. So at those extinct position, you see the brightest of the colors that are shown by these interference colors. Now here is the chart which you can see. The first order color that shows gray and white and light yellow colors. The example are quartz, plagioclase, orthoclase, hypersthene, chlorite. Second order color, they show the color of vibgyor, and they are very sharp, they are distinct and bright colors like in augite and hornblende. Whereas when you go to third order colors, again it is vibgyor colors, but they are faint rainbow colors as in muscovite and biotite. And the fourth order and the higher orders are pale green and faint colors like in calcite and zircons. Now here you see this interference. This is Michael-Levy chart, and here you can see as you move from your left towards your right, the intensity of the color increases. Here you see first order interference colors, light gray and yellow, then slowly it becomes brighter and again it fades out. So this was Michael-Levy's chart. Now what is extinction? When the vibration direction of ordinary and extraordinary ray of isotropic mineral are parallel to the vibration direction of Nichols in a petrological microscope, then at this position, mineral is said to be at an extinction position. This happens because the light passing through the polarizer passes through the mineral, but it is stopped by the analyzer,
as it has the vibration direction perpendicular to the polarizers, this phenomena, it occurs 4 times during the rotation of the stage at 360-degree rotation. So this extinction position you get 4 times. This I have explained to you. Now you look at this slide here. This is the mineral hypersthene. This is having parallel extinction, so that when the mineral grain, the cleavage or the boundary of the mineral grain is brought parallel to this crosswire, the mineral becomes dark. So this is known as parallel extinction. Another example I give you, this is oblique extinction. This is displayed by minerals like augite, hornblende. So this is the example of augite mineral. This is augite mineral. So when the cleavage of this augite mineral is brought at an angle, that is when you put this mineral parallel to the crosswire, it is not at its extinction position, but as you rotate, it gets a position where the mineral is extinct. So it is at an angle of around 45 degrees. So this is known as oblique extinction. Now twinning. See, when the minerals, they grow in their natural habitat, they intergrow each other. When they intergrow each other, so when you look under the cross Nichols, what you see? You see twinning. For example, you see this polysynthetic twinning. This is in plagioclase. You get the bands, very narrow bands in the mineral. Here you see these bands on your TV screens. And then the second one, this is Carlsbad twinning, which is simple twinning you get in mineral like orthoclase. Then this is cross-hash twinning, the lowermost. What happens in this? The lamella, they are at crisscross position, and this type of twinning you find in microcline. So twinning becomes again a very diagnostic property of a mineral under a microscope. Like these are all plagioclase. These are all feldspar minerals. But only on the basis of twinning you can identify plagioclase, which is having polysynthetic twinning. You can identify orthoclase, that is having Carlsbad twinning. You can identify microcline, that is having cross-hashed twinning. Now the another example, the another property, that is zoning. What happens when the minerals like plagioclase, they crystallize in a solid solution series? So the composition, it changes concentrically. So when you put the slide under the microscope, because of the different composition, the color changes in form of zone. So augite is having hourglass zoning, and then tourmaline is having prismatic zoning. Here is an example of a plagioclase where you see that these lamellas, they are arranged in a concentric position. So this was all about the properties which you study under the cross-Nichols. But before the time is going up, but before we finish with this session, I just want to give you an example so that you understand how to write these properties in your practical books. Here is an example of a plagioclase. See, when you discuss plagioclase, this figure which I am pointing at, this is under polarized light. So when you describe, you say it is transparent. Then when the next property you describe, shape, it is having a tabular shape. Then color, it is colorless. Pleochroism, definitely it is non-pleochroic, as you see on your screens. Then cleavage, yes, it is having one set of distinct cleavage and second is indistinct. And then inclusion, yes, you can see these inclusion. There are some alteration, some clay minerals, they are developed. Now next, when you describe this particular mineral between the cross-Nichols, on my right side you see this figure, you see this banded figure. Now what you see? Yes, it is anisotropic because you can see colors. And what are the interference colors? They are first order colors because they are white and light and gray colors. Then extinction, when you rotate it, you get extinction position. And twinning, you see very well developed polysynthetic twinning that I have already told you. Then zoning also,
Plagioclase displays a very nice zoning. Here you can see below, you can see this concentric, in this figure below, you can see these concentric layers and you can see very beautiful zoning. So this is how you describe a plagioclase when you look at the microscope. Now let us sum up. We had a very interesting session. Hope you must have enjoyed it. We learned what is optical mineralogy. Then we learned what are the optical properties that you study under the plane polarized light, such as transparency, shape, habit, size, color, pleochroism, cleavage, relief, inclusion, and alteration. We also discussed about the optical properties between the Krasnikov, such as isotropism, anisotropism, interference colors, extinction, twinning, and zoning. And also we discussed the plagioclase as an example for you to understand. Hope you enjoy the session. Thank you. Thank you. आसाम की विशालता केवल ब्रह्मपुत्र नदी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक वातावरण में भी दिखाई देती है। यही वह कामरूप है जिसकी गाथा पौराणिक कहानियों में भी पाई जाती है। मैं कामरूप हूँ, मैं साक्षी हूँ उस पौराणिक काल का। प्रभु महादेव की करुणा से मुझ में ही कामदेव को नया जीवन मिला, इसलिए मैं कामरूप हूँ। ऐसी ही एक पौराणिक गाथा जुड़ी है आसाम के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या देवी के मंदिर के साथ। प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त मां कामाख्या के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए समस्त संसार भर से यहाँ पर आते हैं। जिस पहाड़ी पर मां कामाख्या का मंदिर स्थित है उसे नीलांचल पहाड़ कहते हैं। वर्तमान में मंदिर तक पहुंचने के लिए अति उत्तम मार्ग की व्यवस्था है। परंतु एक समय ऐसा भी था जब लोगों को पत्थरों की सीढ़ियों पर चढ़कर वहां तक पहुंचना पड़ता था। भक्ति के साथ साथ यह एक पर्यटन स्थल भी है। यहाँ के स्थानीय निवासी इसी पर्यटन से अपनी आजीविका भी चलाते हैं। नमस्कार। आज की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का विषय है ग्रामीण भारतीय समाज, और ये हमारे MARD, PGDRD और CRD के कोर्स रूरल डेवलपमेंट इंडियन कंटेक्स्ट का एक पार्ट है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से डॉक्टर प्रणवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार जी। आज का जो विषय है ग्रामीण भारतीय समाज, उसकी विस्तृत चर्चा आज हम करेंगे। किसी भी समाज को समझने के लिए उसकी संस्कृति और उसके चरित्र को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको संस्कृति और चरित्र को समझने के बाद ही हम उस समाज की
पृष्ठभूमि, उस समाज की चिति, उस समाज के इंसाइट्स को देख सकते हैं। तो हमें उसकी विस्तृत चर्चा आज हम करेंगे और उसके जो विकास के पहलू हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रणवीर सर, जो भारतीय ग्रामीण समाज है, इसकी एक क्या पृष्ठभूमि है, क्या इसका आधार है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लर्नर्स को जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बुलाया है और जिस बिंदु को आपने रखा है कि किसी भी समाज को समझने के लिए उसके जो मटेरियल डायमेंशन है या जो उसके जो मूल्य हैं और जो उसका भौतिक संसाधन है, ये दोनों एक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तो इसको मैं शुरुआत इस तरह से करूँगा कि भारतीय समाज और ग्रामीण समाज की जब हम बात करते हैं मुख्यतः, तो हमको उसके मूल्यों को देखना होगा और हमको ये भी देखना होगा कि वो प्राकृतिक संसाधन, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, इन सारी चीज़ों के साथ वो कैसे एक समन्वय बनाता है। तो भारतीय समाज की जो एक विशेषता रही है ग्रामीण समाज की, वो रही है उसके मूल्यों का। तो अगर हम इस तरह से देखें कि किस तरह से भारतीय समाज की अपनी एक मुख्य पहचान, एक विशेषता उसको कैसे मिलती है, तो हमको कुछ सामाजिक तथ्यों को देखना होगा। और उसमें पहला तथ्य है ग्रामीण समाज की जो परिवार की रूपरेखा है वो किस तरीके से है, वहाँ पे नातेदारी की व्यवस्था किस रूप में है, वहाँ पे रीति रिवाज कैसे हैं और सामाजिक समूहों में अंतरक्रिया किस रूप में है। तो ये हमको एक गहन रूप से भारतीय ग्रामीण समाज को समझने में मदद करेगा। देखिए, आज के दौर में जहाँ पर व्यक्तिवादिता, जिसे हम कहते भी हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन या इंडिविजुअल टेंडेंसी, तो भारतीय जो ग्रामीण समाज है वो मूल रूप से भारतीय सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख जो एक बिंदु है वो है समूह को विशेषता देना या समूह को लेते हुए व्यक्ति अपनी क्रियाओं को करता है। तो परिवार में जो हम जानते भी हैं, भारतीय ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण समाज की एक बहुत जो महत्वपूर्ण एक जो इकाई है परिवार है, और उसमें जो महत्वपूर्ण एक पहचान है वो है संयुक्त परिवारों की। तो जो संयुक्त परिवार है अगर आज देखें तो हम जानते हैं कि इसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो एक मनुष्य को जो विकास का मौका मिलता है और जो प्रतिस्पर्धा या उसको अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका जो एक परिवार देता है संयुक्त परिवार में, वो इसको एक विशेष पहचान देती है। तो आज जैसे शहरी इलाकों में है कि वृद्ध लोगों को रखने की समस्या है या छोटे बच्चों को पालने की समस्या है, और आप देखें कि शहरी क्षेत्रों में वृद्धों का और जो छोटे शिशु हैं इनको एक सही सामाजिक या एक सही मानवीय अंतरक्रिया मिलने में एक समस्या हो रही है, जिसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, या हम ये भी कहते हैं कि ओल्ड एज प्रॉब्लम है, जो आजकल मेट्रो सिटीज़ में और बड़े शहरों में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। तो जो एक ग्रामीण समाज है, ये संयुक्त परिवार जिसकी इकाई थी, उसमें इसको बहुत ही कहते हैं कि मानवीय तरीके से इसको एक समायोजन किया गया था। परिवार में वृद्धों की उपयोगिता कभी ख़त्म नहीं होती थी, और जो नवजात शिशु होते थे और या जो छोटे बच्चे होते थे, उनका भी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जिसको हम कहते हैं भावनात्मक पक्ष है, वो बहुत अच्छे से समायोजित होता था। तो ये जो हमारे ग्रामीण समाज का एक मूल बिंदु है कि मानवीय भावनाओं को किस तरह से प्रोडक्टिव तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से समाज में या दूसरे कार्यों में उसका उपयोग किया जाए। दूसरा था जो आज के दौर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस महत्वपूर्ण है, आप कहें कि आजकल शहरी जो एक वातावरण है वो है नातेदारी का। आज जहाँ पे
शहरों में या हम पश्चिम देशों में देखते हैं कि व्यक्तिवादिता इस तरफ है कि लोगों में सहयोगात्मक पक्ष खत्म होता जा रहा है। तो ग्रामीण जो जीवन था उसका अगर एक मानवीय पक्ष देखें तो उसमें सहयोगात्मक पक्ष जो था, कोऑपरेट करने की टेंडेंसी, वो नातेदारी व्यवस्था में व्यक्ति में उसको उभारने का एक काम करता था, स्वयं और परिवार से आगे बढ़कर देखने का एक प्रयास। अब ये सहयोगात्मक जो एक प्रवृत्ति थी, ये गांवों में, गांव के जो दूसरे समूह हैं उसमें हम पाते हैं जो एक बहुत बड़ा एक रहा है समाजशास्त्रीय पहलू से भी और अर्थशास्त्रीय पहलू से भी, कि किस तरह से भारत में विभिन्न समूह आर्थिक क्रियाओं को करते हुए एक सामाजिक समन्वय बनाते थे, जिसको हम जानते भी हैं। हम सब समाजशास्त्री या सामाजिक विज्ञान में जजमानी व्यवस्था के रूप में देखते हैं कि गांवों में हर सामाजिक समूह के पास कोई कार्य और कोई दायित्व होता था। तो जैसे हम शहरों में पाते हैं कि एक सोशल आइसोलेशन, सामाजिक रूप से आप अलग हो गए या आप सामाजिक रूप से जुड़ नहीं पा रहे हैं। गांवों के जीवन की, भारतीय गांवों की एक प्रमुख विशेषता लोगों को एक दूसरे से जोड़ना और उसमें एक आदर्शात्मक संबंधों का निर्माण करना। ये उसके एक, हम अगर बात करें जो एक फंडामेंटल, जो एक मूलभूत, जो भारतीय गांव भारतीय सभ्यता के रूप में एक सूक्ष्म रूप से इन क्रियाओं को प्रभावी तरीके से करते थे। तो उस रूप में अगर आप कहें तो भारतीय जो गांव थे, विदेशी विचारकों ने भारतीय गांवों को भौतिक आधार पे और आर्थिक संसाधनों के आधार पर पिछड़ा पाया था, लेकिन ये एक उपनिवेश काल में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक जो सोच बनी, उसमें एक तरह का ये एक तरह का बायसनेस जिसे हम कहें, एक तरह का उनका भारतीय समाज को ना समझ पाना, ग्रामीण समाज की चेतना को ना समझ पाना, एक पक्षीय फंडामेंटल, हाँ, वो उन्होंने उसको ज़्यादा उस प्रभाव से उन्होंने देखा। लेकिन आज हम जब देखते हैं अमेरिका में, यूरोप में, जिस तरह से छोटे बच्चे बंदूकों को लेकर के हिंसा कर रहे हैं, या शहरों में जिस तरह से जो नए युवा लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति है, अगर आप ग्रामीण समाज को देखें, भारतीय समाज को देखें, तो उसका अगर आप कहें कि जो उसका मूल उद्देश्य क्या था, तो मनुष्य की भावनात्मक विकास को सही दिशा देना, ये उसका एक जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था। लेकिन आज जैसे आपने भी ये बात शुरू में रख दी थी कि परिवर्तन हो रहा है जी, और ये परिवर्तन नए तरह के सवालों को खड़ा करता है। गांवों में अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो भारत के भारत देश में जो टोटल प्रोडक्शन है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं, उसमें 1970 से लेकर 2011 तक जो ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक योगदान था वो घटा है। और ये आर्थिक योगदान जो घटा है, इसका एक असर तो सकारात्मक है कि जो भारत में सर्विस सेक्टर है उसका योगदान बढ़ा है, लेकिन जो उसमें एक नकारात्मक पक्ष है कि जो रोजगार, जिस मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में लोग रोजगार पाते हैं, उस मुकाबले में वहाँ पर कैपिटा इनकम, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है। और मुझे कहना पड़ेगा कि आज की जो हमारी तत्कालीन सरकार है, उसमें जो कौशल विकास नीति है, स्किल डेवलपमेंट इंडिया, ये एक बहुत दूरगामी, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। आत्मनिर्भरता की बात हाँ, इसमें की उसमें जो सरकार थी उन्होंने ये पाया है कि हमारे यहाँ जो यूथ है उसके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, मुझे लगता है कि आने वाले दशकों में स्किल इंडिया का एक बहुत ही सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक कृषि प्रधान नहीं, एक व्यापार प्रधान देश था। तो गांवों में लगातार जब छोटे लेवल पे कौशल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं विकास
और आर्थिक विकास में आत्मनिर्भरता भी ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली है। तो ये जो एक बहुत सकारात्मक जो परिवर्तन नीति के रूप में जो हमारी केंद्र सरकार ने किया है, ये इसका गांवों में जो बेरोजगारी की समस्या है और जो स्किल्ड जो कहते हैं एजुकेशन की बात है, एजुकेशन विद स्किल की बात है, उसको लेकर के ये दूरगामी असर डालने वाला है। तो ये तो एक आपका एक पक्ष ये हुआ जो हमारे तत्कालीन जो आर्थिक बदलाव हो रहे हैं और उसका जो हमारे ग्रामीण समाज पे असर पड़ रहा है, वो उस तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण एक परिदृश्य बन रहा है, वो है कि मीडिया के थ्रू, या चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो मोबाइल की सोशल नेटवर्क साइटिंग हो, जो ग्रामीण और जो हमारा जो शहरी समाज है, तो ग्रामीण समाज राष्ट्रीय मुद्दों में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, पर मैं प्रमुखतः राष्ट्रीय मुद्दों पे कहना चाहूँगा, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हों या राष्ट्रवाद के मुद्दे हों, ग्रामीण समाज भी और उसके जो जनमानस है पूरी तरीके से इन पर अपनी अभिव्यक्ति रखता है। और मुझे लगता है कि इसका भी बहुत सकारात्मक असर पड़ा है, क्योंकि आज़ादी के बाद से 2000 तक आप कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों ने भारतीय राजनीति को एक दिशा और दशा दी, लेकिन मीडिया के आने से आज जो हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, इनके विचार भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हुए हैं। और इसमें भी जो हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन है और जो हमारी तत्कालीन सरकार है, इसकी नीति जो जिसको में कहा जाएगा कि ये आईटी जो सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का जो डेमोक्रेटाइजेशन किया गया है, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क की बात है, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ चीप मोबाइल फोन्स की बात है, लो कॉस्ट फोन्स की बात है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का भी बहुत विस्तार हुआ है और सामाजिक और राजनीतिक चेतना और उस पर अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा एक रास्ता मिला है उनको। तो ये एक आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये किस तरीके से जो भारतीय मुद्दे हैं या भारत जनमानस के मुद्दे हैं, उनको एक कैसी दिशा देता है, ये एक देखने की चीज़ होगी। और जो दूसरा पक्ष है, मैं एक और पक्ष की बात करना चाहूँगा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, वो है कि पूर्ववर्ती लेखन में, और वो भारतीय भी थे और ये इसमें हम पश्चिमी लेखकों को बात शामिल करेंगे, तो उन्होंने भारतीय गांवों के जीवन को जिस तरीके से नकारात्मक, मैं नकारात्मक इसलिए भी यूज़ करूँगा कि उन्होंने जो हमारे जो गांवों की जो आध्यात्मिक जो बातें हैं, और यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज यूरोप और अमेरिका ये बात स्थापित हो गई कि हमें नेचर के साथ समन्वय से रहना है। हमें आयुर्वेद के गुणों के फ़ायदे को आज आप दुनिया भर में देख सकते हैं, हमें योगा के फ़ायदे को आप दुनिया भर में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पूछें कि भारत में इसको संरक्षित कहाँ किया गया, तो वो ग्रामीण जीवन में ही किया गया। और उस रूप में भारतीय गांवों ने विश्व धरोहर को, जो आज विश्व भर में मानव चेतना को या मानवीय समस्याओं को एक नए तरीके से रिसोर्स दे रहा है, क्षमता दे रहा है देखने का, उससे मुक्ति पाने का, तो ये भारतीय ग्रामीण जीवन शैली में था, जिसका आप उदाहरण आज भी देखते हैं। राजस्थान में जैसे एक बिश्नोई समाज है, वहाँ पे हिरणों के साथ मानवों का वो संबंध है जैसे परिवार के लोगों का संबंध होता है। तो जो आप देखें, जो यूनाइटेड नेशन में 80s में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट हुआ, एक तरह का एक ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ, प्राकृतिक आवश्यकताओं के साथ एक निरंतरता बनाए, भारतीय जो ग्रामीण समाज है, वो अपने मूल रूप से इन्हीं विचारों से अपने आप को क्या कहते हैं, निर्देशित करता रहता था। तो इस रूप में भी देखें, भारतीय समाज की, ग्रामीण समाज की एक बहुत बड़ी उपयोगिता है जो हमें सामान्यतः
मटेरियल डायमेंशन में नहीं दिखती है। अगर आप शहरी क्षेत्रों से उसका एक, अगर आप उसको एक कंपेयर करें, आप उसको एक इवैल्यूएट करें, तो आपको लगेगा कि वो आर्थिक पक्ष से बहुत गरीब है। लेकिन हमने ये आज जो हमने विकास की जो विरोधाभास देखा है वैश्विक लेवल पे, मैं आपको बात कह रहा हूँ, विश्व के रूप में जो देश आर्थिक रूप से संपन्न है वो मानवीय पक्षों में, जैसे हम कोई ह्यूमन इंडिकेटर कहते हैं कि वहाँ पे लोगों में कितना ज़्यादा हार्मोनी है, कितना ज़्यादा एक पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात करें, वहाँ पे वो काफ़ी पीछे हैं। और आज के राजनीतिक परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य में हम देख रहे हैं, तो गांवों का जो, भारतीय गांवों का जो मूल रूप से जो चरित्र था वो भारतीय संस्कृति के मूल भावों को अभिव्यक्त करता था। तो मानवीय संबंधों में ऊंचे मानवीय आदर्श, जहाँ पे विदेशी लोगों को ये लगा, विदेशी जब अब उपनिवेशवाद के दौर में थे, उनको भारतीय गांव उनको भारतीय गांव पिछड़े हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने भारतीय गांवों में मानवीय मूल्यों को उस तरीके से देखा नहीं या अप्रिशिएट नहीं किया, जो भी कारण था। लेकिन आज के दौर में हम कहीं ना कहीं, भारत में भी आप देखिए, अगर कोई संगठन होता है तो हम कहते हैं ये बहुत अच्छा, हमारा संगठन, हमारी राजनीतिक पार्टी एक परिवार है। हम कभी नहीं कहते कि ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन या एक यूनिवर्सिटी है, पर हम कहते हैं परिवार है, क्योंकि परिवार की जो विशेषता है वो गांवों में मानव को पशु से मानवीय गुणों की तरफ बढ़ाता है। हम की भावना करता है कि आपको एक अपने से ऊपर उठकर देखने की क्षमता देता है। और आप देखिए जो शहरी विकास हुए हैं उसमें आप बहुत से विचार, बहुत से जगह लेख आते हैं और बहुत से स्कॉलर्स ने लिखा भी है और पब्लिक में भी आता है, मीडिया में आता है कि धीमे धीमे हम लोग मानवीय घटनाओं से और मानवीय अभिव्यक्तियों से दूर होते जा रहे हैं, हम सेंसिटिव नहीं हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जिस तरह से शहरी जीवन, जिस तरह से पूरा शहरी जीवन व्यवस्थित किया गया है और उसके जो मूल बिंदु हैं। और जब तक इन मूल बिंदुओं को हम ठीक नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि विकास तो होगा, आर्थिक विकास होगा, लेकिन उसमें हम कहें कि ह्यूमन हैप्पीनेस कितना है, वो एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा। जी, आपने बड़ा विस्तृत रूप से बताया कि जो भारतीय ग्रामीण चरित्र है उसमें एक सरलता है, उसमें पारिवारिक मूल्य है, मूल्य प्रधान संस्कृति में जो मूल्यों की प्रधानता है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सहसहयोग और सहअस्तित्व की भावना है, कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस की भावना है, भाईचारा, बंधुत्व और शांति की भावना है, और कलेक्टिव कंसाइंस है, सामूहिक निर्णयों की बात यहाँ पे की जाती है। अब बात आती है डॉक्टर साहब, जो सामाजिक पहलू आपने बताया, राजनीतिक पहलू बताया, अब इसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं भारतीय ग्रामीण समाज के सामने आज के दौर में? आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि भारतीय ग्रामीण समाज भी कहीं ना कहीं ट्रांजिशन या एक संक्रमण काल से गुजर रहा है ना, नई तकनीक, नए व्यवहार, इन सब से रूबरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कई नई चुनौतियाँ भी आ रही हैं आज से ना। परिवार व्यवस्था, जैसा आपने बताया, परिवार व्यवस्था में भी टूटन की स्थिति हम देख रहे हैं। संयुक्त परिवार जो हमारी ताकत हुआ करता था उसमें आज हम टूटन देख रहे हैं। तो क्या क्या मुख्य चुनौतियाँ हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके कई आयाम भी हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूँ और उसके बाद आपके इस प्रश्न का हम लोग इस पे कुछ विश्लेषण करें। अगर आप देखें, एक जो इशू कुछ लंबे समय से है वो है किसानों की आत्महत्या, फार्मर सुसाइड। और वो ऐसा नहीं कि वो किसी एक दौर में है, पिछले 2.5 दशकों में मुझे कहा जाए कि अगर लेट 90s और अर्ली 2000 और फिर 2010 के बाद भी अब ये घटनाएं हैं। तो इसका अगर आप एक सामाजिक तथ्यात्मक मूल्यांकन करें तो ये इन प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में हुआ है, अगर आप यूपी और बिहार के भी गांव लें जहाँ पे लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, मतलब एक ग्रामीण परिवार के पास जो भूमि है कृषि के लिए छोटी है, आर्थिक समस्याएं भी हैं, लेकिन आप वहाँ पे किसान आत्महत्या जैसी परिस्थितियां नहीं पाते हैं। तो पहला जो मैं इस उदाहरण के साथ ही हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं कि जो एक पहला इशू है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो शहरी अर्थव्यवस्था से जुड़ चुकी है
और पहले जो गांव सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्शन करते थे, प्राइमरी प्रोडक्शन जैसे खाद्यान्न, फिर इन्हीं खाद्यान्नों को हम आगे भेजते हैं और ये शहरों में अलग अलग रूप से अलग अलग तरह के वस्तुओं में परिवर्तित होते हैं और लोगों के उपयोग में आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है और उसमें ये जो प्राइमरी प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, अब ये शहरों से लिंक हो गया है। तो कपास की खेती जैसे होती किसानों ने की, उन्होंने पैसे लिए और उन्होंने लोन लिए, और उसमें आप देखिए कि जब भी कपास के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दाम गिरते हैं तो किसानों की इनकम पे तुरंत असर आता है। जी जी। और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा था किसानों की आत्महत्या। जिन क्षेत्रों में आत्महत्या हुई है वहाँ पे यही मुद्दा है। लेकिन प्रश्न ये है कि इसमें ग्रामीण समाज के मूल्य कैसे प्रभावित होते हैं। तो जिन आपने जो कहा, जो सबसे बड़ा परिवर्तन ग्रामीण समाज में हो रहा है वो बहुत तेजी से शहरी तरीके से जीवन शैली, और शहरी जीवन शैली का जो मुख्य एक जो अगर हम आलोचनात्मक आधार देख आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखें, वो है कि एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का परिवार सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। और जहाँ पे किसानों ने आत्महत्या की है वहाँ पे बहुत से जो भी अध्ययन किए गए, वहाँ पे सामाजिक संबंध नहीं थे। जैसे गांवों में पहले किसी के पास कोई आर्थिक समस्या हो जाए तो गांव में दूसरे से मदद मांग लिया करता था, तो जिसे हम कहते हैं कि एक सोशल रिलेशन था हेल्प का, जो भारतीय गांवों में होते थे। अब ये सोशल रिलेशन तो ख़त्म हो गया और लोगों ने कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स किया। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स तो हो गया, लेकिन सामाजिक जो संबंध थे जिससे उसको एक निश्चितता मिलती थी, मुसीबत के समय उसे कोई मदद मिल जाती थी, वो ख़त्म हो गई। और जैसे ही क्राइसिस पड़ा, जैसे ही आर्थिक विपत्ति आई, तो किसानों के पास आत्महत्या के अलावा अपने परिवार को बचाने का कोई माध्यम नहीं था। तो आप अगर देखें कि आर्थिक विकास सामाजिक मूल पहलुओं पे परिवर्तन कर रहा है, लेकिन ये परिवर्तन वहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से एक अपने आप में बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ा कर रहा है। अब इस पे कहीं ना कहीं एक सामाजिक समस्या है, और इसका कहीं ना कहीं एक सामाजिक राजनीतिक तो ठीक है, इसका एक पक्ष है। सरकार अब क्रेडिट दे रही है, ये भी प्रयास कर रही है कि हम जो बीच में जो प्राइवेट मनी लेंडर्स उनको हटाएं, लेकिन हम जो एक सामाजिक पक्ष के रूप से देखें, सामाजिक तथ्य को अगर विश्लेषण करें, तो अगर ये प्रवृत्ति बढ़ती रही तो ग्रामीण जीवन में या ग्रामीण परिस्थितियों में सामाजिक जो चैनल थे हेल्प के, वो डिसॉल्व हो गए हैं या बहुत तेजी से डिसॉल्व हो रहे हैं, और खासकर उन राज्यों में हुए हैं जहां पे कृषि लाभ के लिए की जा रही है। तो इस मामले में अगर ये आप देखें तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा है कि सांस्कृतिक रूप से जो गांव शहरों की तरफ देख रहे हैं, और उसमें आपको अगर आप एक चीज को गौर करें, जो भारतीय जो सिनेमा है उसने गांवों को जिस तरह से रखा है, या तो गांव के लोगों को बहुत भोला दिखाया है, या ये दिखाया है कि वो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से काफी निर्धन है। तो ये दोनों ही स्थिति कोई बहुत सकारात्मक गांवों के दृश्य को नहीं रखता है। कुछ सिनेमा ने कुछ मूवीज में, कुछ चलचित्रों में ऐसा दिखाने का प्रयास, कुछ पॉजिटिव डायमेंशन भी लिया गया है, लेकिन जहां तक मैं बात कर रहा हूं जो पॉपुलर मीडिया में है कि गांवों में आर्थिक या सामाजिक रूप से वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। गांव के प्रति जो रिफ्लेक्सिव अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी, मतलब एकदम करेक्ट नहीं है। वो करेक्ट नहीं है, वो एक बैलेंस व्यू नहीं दिखाते। अगर आपको गांव के बारे में दिखाना है तो आप गांवों के सक्सेस स्टोरीज को भी दिखा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में विलेज हैं, जैसे हमारे राजस्थान में भी कई ऐसे गांव हैं, आपके पंजाब में भी गांव हैं जो आर्थिक रूप से भी संपन्न है और ग्रामीण जीवन को एक महत्व देते हैं या ग्रामीण मूल्यों को एक महत्व देते हैं। तो वहां पे ये एक पक्ष जो है कि शहरी जीवन जब ग्रामीण लोग लेंगे तो मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी आर्थिक एक तरह का जिसे कहते हैं इकोनॉमिक रिलेटिव डिप्राइवेशन बन जाएगा, और जिससे रूरल एरियाज में यूथ में एंजाइटी का एक नया डायमेंशन ओपन हो रहा है, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है कि हम इतने ही संसाधन सारे गांवों में उपस्थित कर सकें। जी जी।
आज आपने बहुत ही विस्तार से और सूक्ष्म दृष्टि दी ग्रामीण भारत के बारे में। मैं अंत में एक लाइन कहना चाहूँगा कि जो भारतीय ग्रामीण समाज है वो साधना में जीता है, साधक प्रवृत्ति है, साधक मानसिकता है। और हाँ, एक लाइन कहूँ तो, एक पंक्ति कहूँ तो कि साधनों में जीना इंडिया है और साधना में जीना भारत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। नमस्कार।